So, uh, a very good evening to all of you present here. Myself, Dr. Ankit Kumar, and I am assistant professor in the Department of Mathematics at Chandigarh University. So, in today's lecture, basically we discuss the most important topic of the real analysis, which is a metric space. So in this presentation, in this lecture, basically, first of all, we describe the metric spaces, definitions, and terminology. Okay, then some important examples. Some important examples. After that, open sets. So, what is the definition of the open sets? Properties of the open set and theorems. Similarly, closed set, definition of closed sets, comma properties and theorems. Next, what is the cauchy sequence? Definition and theorems. After that, complete metric space. What is the complete metric space? And difference. So, basically in this lecture, we will describe the pseudo-metric space, its definitions, terminology. After that, we describe some most important examples. Okay. After that, open sets and closed sets, definitions of the open sets, properties of the open sets, closed sets, definition of the closed sets, properties, theorems. Cauchy sequences and complete metric spaces. So, definitions and theorems, Cauchy sequences, definitions and theorems, and what is the complete metric space? What is the complete metric space? Its definitions, etc. Okay. So, what is the pseudo-metric space? So, basically, first of all, we define definitions. A pseudo-metric space. A pseudo-metric space is a set together with a non-negative real valued function called a pseudo-metric space such that for every dxx is equal to 0. So d of x comma x is equal to 0. D of x comma y is equal to d of y comma x. This is the property. So d of x comma x is equal to 0 implies that x is equal to y. Okay. And this is the triangle inequality. If we define d of x z is less than or equal to d of x comma y plus d of y z. Unlike a metric space, points in a pseudo-metric space need not be distinguishable. That is, one may have distinct values. That is, one may have distinct values. Okay. So, unlike a metric space, this is a metric space in a metric space.
Points in a pseudometric space need not be distinguishable, meaning there are many points which are not distinguishable. So in a pseudometric space, points are not distinguishable. That is, one may have distinct values. That is, one may have a distinct values. That is, one may have a distinct values. So what are the most important examples of the metric spaces? How we will define this? So suppose let capital X is equal to R square and consider the function d such that x cross x2 the non-negative real numbers given by d of x1 comma x2 y1 comma y2 is equal to mod of x1 minus y1. Then d of x comma x is equal to mod of x1 minus x1 is equal to 0. And d of x comma y is equal to mod of x1 minus y1 is equal to mod of y1 minus x1 is equal to dy is it. And the triangle inequality follows from the triangle inequality on R1. So x comma t satisfies the defining conditions for a pseudometric space. So let x is equal to r square and consider the function this to the non-negative real numbers given. So let capital X is equal to r square be a space. Okay. Be a space of two-dimensional space. And t such that x cross x2 are to the non-negative real number. T of x1 comma x2 and y1 comma y is equal to mod of x1 minus. Okay. So t of x comma x is equal to x minus x is equal to 0. Okay. And this is a non-negativity condition. T of x comma y is equal to mod of x1 minus y1. If we take the negative, if we take the common as a negative, y1 minus x1 is equal to t of y1. And the triangle inequality follows from the triangle inequality of y. And what is the triangle inequality? T of x comma y is less than t of x comma z plus t of z comma. It is a similar as in R. So x comma d, satisfies the defining condition of a pseudometric space. Okay. So x comma d satisfies the defining condition of a pseudometric space. So this is a pseudometric space. So I will discuss the examples of the pseudometric spaces. So the trivial pseudometric space.
the trivial So the trivial pseudometric space is the best example of pseudometric space. The trivial pseudometric space is what? This is the trivial pseudometric space because so the trivial pseudometric space Tx comma y is equal to 0 for all x comma y belongs to capital X is a pseudometric space. If capital X is a vector space and P is a semi-norm over capital X, then D of x comma y is equal to Px minus y is a pseudometric on capital X. Okay. So if you define D of x comma y is equal to D of x minus y is a pseudometric on capital X. Okay, so if you define D of x comma x and P of x minus y, and you suppose that this is norm of x minus, so this is xy. So if we take D of x comma x is equal to norm of x minus x, so satisfies first. So satisfies this first one. So this is D of x comma y is equal to Px minus y is equal to norm of x minus. Let capital X be a set x not belongs to capital X and let fx be a function x tending to R, then D of f comma g is fx naught minus gx naught is a pseudometric. Suppose D of f comma g is
mod of fx naught minus gx f comma x minus d of, and what is the second property? D of x comma y is equal to d of x. So d of f d of g comma f is equal to gx naught minus fx naught, which is equal to fx naught minus gx naught. Because if we take the negative sign outside of this uh, bracket, so because the mod function is a positive function, so we take the negative sign outside of this function and we obtain the fx naught minus gx naught times. Okay. And this function also satisfies the triangle inequality. Triangle inequality. This satisfies also the triangle inequality. Now we discuss the open set and closed sets. What is the open sets and what is the closed sets? So definition: let M comma D be a metric space. Suppose M comma D be a metric space where M is a space and D is a metric. इसको डिस्टेंस फंक्शन भी हम कह सकते हैं. Distance. And for A belongs to capital M and R positive, we define the open ball about A of radius R to be the set. So let M comma D be a metric space. For A belongs to a capital M and R positive, we define the open ball about A of radius R to be the set. Suppose for A belongs to M. Suppose A belongs to capital. We define this open ball at a and R positive. We define the open ball about A. This point A. We define a open ball about A of radius R. So this is radius R. Okay, and this is open. So here we contain all the points. So इस R रेडियस की बॉल के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ओपन बॉल. ओके, एक पॉइंट ए कंसीडर करिए
इस पॉइंट पे आर रेडियस का कोई भी ओपन बॉल कंसीडर करिए। उस ओपन बॉल में जितने एक स्फीयर, ये सर्कल टाइप का आप कंसीडर करिए, और उसमें जो भी जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? ओपन बॉल। वो सारे के सारे क्या होंगे? ओपन बॉल होंगे। सो सपोज BRA is equal to x belongs to capital M such that D of x comma A is less than to R. Suppose this is a ball. This is an open ball of radius R about the point A. Open ball of radius R about the point A is equal to हर एक वो x M से बिलोंग करे कि such that D of x से less than to R है। डिफिनीशन सेकंड क्या कह रही है ये चीजें आप देखिए। व्हाट इज द डिफिनीशन? So let M comma D be a metric space and let X belongs to M. A subset A of M is said to be a neighborhood of capital X if there is an epsilon positive such that BE is the subset of X. That is, if A contains an open ball about X. That is, if A contains an open ball about X. थोड़ी देर के लिए आप ये सपोज करिए कि M comma D कोई एक मीट्रिक स्पेस है। M comma D भी मीट्रिक स्पेस है और कोई x जो है वो M से बिलोंग करे। कोई x जो है वो M से बिलोंग करे। A subset A of capital M is said to be a neighborhood of small x if there is an epsilon positive such that BE is a subset of x, that is if A contains an open ball about capital X. तो सपोज करिए कि थोड़े थोड़े पार्ट में इसको डिवाइड करिए। M कॉमा D कोई मीट्रिक स्पेस और x कोई M से बिलोंग कर रहा है। A एक सबसेट है M का of M is said to be neighborhood of x। ये A said to be neighborhood of x if there is an epsilon positive such that B epsilon is the subset of x. That is, B epsilon is the subset of capital X. That is, if A contains an open ball about x. If capital A contains an open ball about x. ओपन सेट्स क्या हो जाएंगे? Open sets means let M comma D be metric space, then the open sets in a satisfy following property. So आप सपोज करिए कि ओपन सेट है। आप ये सपोज करिए कि let M comma D be a metric space है, then the open sets in satisfies the following properties. Open set satisfies the following properties. So let M comma D be a metric space, then the open sets is satisfies the following properties. First of all, phi is open and capital X is open. Phi and capital X is open. Whole set and empty set is
always open. So whole set and empty set is always open sets. Whole set and empty set is always open sets. Phi is open and capital X is open. The union of any collection of open sets is open. The union of any collection of open sets is open, and the union of open sets is open, and union. The finite are infinite. Finite are infinite. Union of open sets is open. Third property is, this is the second, the third property is the intersection of any finite collection. So finite collection of the intersection of any finite collection of open sets is, the intersection of any finite collection of open sets is open. So if M comma D be a metric space, then the open set satisfies the following properties. First of all, phi is open and capital X is open. Okay. The union of any collection of open sets is open. Finite or infinite. So finite हो या infinite हो, यूनियन जो होगा एनी कलेक्शन ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट ओपन सेट्स का वो ओपन होगा. इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट. ठीक है. क्लोज सेट. तो क्लोज सेट्स क्या होते हैं? सपोज लेट M comma T be a metric space. A subset C of M is said to be closed in M comma T, is closed in M comma T if its complement is open in M comma, is open in M comma. So let M comma D, let M comma D be a metric space. C is the subset of M, is C is subset of M comma D. Its complement is open in M comma D. So let M comma D be a metric space. A subset C of metric space is said to be closed in M comma D. Its complement is open. मतलब अगर आप किसी सेट को क्लोज दिखाना चाह रहे हैं किसी भी स्पेस में, तो आप ये समझिए कि उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाएं. इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि मान लो आप कोई भी सेट ले लीजिए, कोई भी सबसेट है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाइए. कॉम्प्लीमेंट में ओपन दिखाने के लिए आप कोई पॉइंट को कंसीडर कर लिए, उसके सराउंडेड एक आर रेडियस के बॉल को बना दीजिए. वो आर रेडियस की जो बॉल होगी उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ओपन बॉल होंगे. ओपन बॉल का कलेक्शन ही ओपन सेट. ठीक है. तो आप इसके कॉम्प्लीमेंट को एक ओपन बॉल दिखा दीजिए, ओपन सेट दिखा दीजिए, और वो जो है वो, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो सेट जो होगा, ओरिजिनल सेट जो होगा वो क्लोज हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से इसके बिहाफ पे आप ओपन और क्लोज की बात कर सकते हैं. ओके. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. तो सपोज
Let M comma D be a metric space, then the closed set is satisfies the following properties. Closed set satisfies the following properties. So theorem है let M comma D be a metric space, then the closed set is satisfies the following properties. First, the null space and whole space is closed. Okay. The intersection of any collection of closed sets is closed. The intersection of any collection of closed sets is closed. And the union of any finite collection of closed sets is closed. जैसे भी यूनियन होता है तो यूनियन है so union of any finite collection of closed sets is closed. Intersection of any collection of closed sets is closed. Null space फाइनाइट कलेक्शन होगा यूनियंस का तो क्लोज सेट होगा इंटरसेक्शन होगा फाइनाइट कलेक्शन का ठीक है तो इंटरसेक्शन फाइनाइट या इनफाइनाइट हो क्लोज होगा लेकिन यूनियन जो हो वो फाइनाइट ही होना चाहिए ठीक है नल स्पेस और वोड स्पेस जो है वो क्लोज करते हैं अब देखना कि कॉची सीक्वेंसेस एंड कंप्लीट मैट्रिक्स व्हाट इज द कॉची सीक्वेंस एंड व्हाट इज कंप्लीट मैट्रिक्स डेफिनेशन में है a sequence xn in a metric space capital X comma T is Cauchy if if for all epsilon positive there exists n belongs to capital N such that m comma n is greater than. This implies that txm comma xn is txm comma xn is less than this. Suppose a sequence xn है in a metric space x comma t is Cauchy if a sequence xn in a metric space x comma t is Cauchy if for all epsilon positive there exists n belongs to capital N such that m comma n is greater than to n. This implies that t of xm comma xn is less than to itself. Meaning thereby a sequence xn in a metric space x comma t is Cauchy if for all epsilon positive there exists n belongs to capital N m comma n is greater than to n. So txm comma xn is less than to epsilon. Suppose txm comma xn is xm minus xn. This is a norm. Suppose xm is minus 1 to the power n and xn is which way put t of xn minus xn is
x to m minus x to n. This is 2m minus 1. This is so trivial. Trivial metric space is also a Cauchy sequence, which satisfies the Cauchy sequence property. And one most important remark: convergent sequence are coming. So convergent sequences are Cauchy. Convergent sequences और Cauchy. जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगी वो सारी की सारी कॉची होंगी, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं। कन्वर्जेंट जो है वो कॉची होंगी, क्योंकि अगर इस थ्योरम्स को एनालाइज किया जाए तो कहीं ना कहीं ये चीजें फाइंड आउट हो रही हैं कि जो कॉची सीक्वेंस है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस का एक पार्टिकुलर केस, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का एक पार्टिकुलर केस है। तो जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगी वो कॉची होंगी, लेकिन कॉची कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि कॉची सीक्वेंस, कॉची की जो क्राइटेरिया है वो एक पार्टिकुलर केस है कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का। सो पार्टिकुलर केस है, जनरल केस तो है नहीं। तो जनरल केस जो है वो पार्टिकुलर केस में तो आ ही जाएगा, ठीक है, लेकिन पार्टिकुलर केस जनरल केस कभी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है काची है, लेकिन कॉची जो है वो कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं, बस इतना सा याद रखिए, कन्वर्जेंट और कॉची, बट कॉचीज आर नॉट कन्वर्जेंट नेसेसरी, ऑलवेज नहीं होगी। A metric space x comma t is complete if every Cauchy sequence in capital X converges in capital X. That is to a limit that is in X. A metric space capital X comma t is complete if every Cauchy sequence in capital X converges in capital X. That is to a limit that is in capital X. अब कन्वर्जन का क्या मतलब हुआ कि कन्वर्ज कैसे करेंगे, तो एक एक टेक्नोलॉजीज को अगर अच्छे से समझेंगे तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियरली विजिबल होगा, क्लियरली समझ में आएगा कि एक्चुअली क्यों होता है, क्यों क्यों कन्वर्जेंस का असली मीनिंग क्या होता है। तो कन्वर्जेंट का कुछ बेसिकली मीनिंग यही है कि जो लिमिट को कन्वर्ज करे, मतलब सीक्वेंस अगर आपको है दी तो वो जो लिमिट पे कन्वर्ज करे वो लिमिट जो है उसी स्पेस में लाई करनी चाहिए। ओके, जिस लिमिट पे वो कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस, वो लिमिट उस स्पेस में लाई करेगी तभी वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बनेगी, अदरवाइज वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं बनेगी। ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का मेनली टास्क था कि एक्चुअली कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस क्या होती हैं। और
कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस बेसिकली यहीं से अराइज होती है, यहीं से डेवलप हुई, और काफी कुछ है कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का, जैसे बहुत सी थ्योरम्स भी हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस पे। ओके, तो बेसिकली इन दिस चैप्टर में, इन दिस लेक्चर में हमने क्या कि स्यूडोमेट्रिक स्पेसेस क्या होते हैं, एक रिमार्क लिख लीजिए कि स्यूडोमेट्रिक स्पेस क्या होते हैं। ठीक है, स्यूडोमेट्रिक स्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इसको मैंने डिस्कस किया। ओपन सेट्स क्या होते हैं एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इसको डिस्कस किया। एक ओपन बॉल है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं ओपन बॉल। ओपन बॉल around the point A, about the point A of radius r। फिर हमने क्लोज सेट को डिस्कस किया एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसमें जो हमने फाइंड किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट्स इज क्लोज्ड, ये प्रॉपर्टी थी। उसके बाद में हमने कॉची थ्योरम को डिस्कस किया। कॉची थ्योरम में पाया कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस every convergence sequence is cauchy, but converse need not be true। थर्ड है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। तो कंप्लीट मीट्रिक स्पेसेस क्या होते हैं? कंप्लीट मीट्रिक स्पेस वो मीट्रिक स्पेस होते हैं जिसमें एवरी कॉची सीक्वेंसेस कन्वर्ज। So this is a complete matrix। So ओवरऑल इन इस लेक्चर में हमने यही सब पॉइंट्स को डिस्कस किया कि कंप्लीट मीट्रिक स्पेसेस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मीट्रिक स्पेसेस क्या होते हैं, और काची सीक्वेंस क्या होते हैं, ओपन सेट्स क्या होते हैं, क्लोज सेट्स क्या होते हैं, मैनी मोर हम लोगों ने ओवरऑल इस पर डिस्कस किया है। और जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मीट्रिक स्पेस के डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और रिमान स्टेल्स इंटीग्रल में भी बात करेंगे कि रीमानियन इंटीग्रल क्या होते हैं। बेसिकली अगर रियल एनालिसिस की बात की जाए या प्योर मैथमेटिक्स की बात करी जाए, तो आप किसी प्रॉपर्टी को या किसी भी थ्योरम्स को आप एग्जांपल से एनालाइज करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि एग्जांपल्स जो हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं इन पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझने के लिए। तो समझने के लिए अगर एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप एग्जांपल्स का एक सेट बनाइए, एक कलेक्शन बनाइए, और उस कलेक्शन को ज्यादा से ज्यादा उस पर फोकस करिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा वो एनालाइज होगा, उतना ही ज्यादा आपको क्लियरली समझ में आए। सो बेसिकली ये सेकेंड लेक्चर था, और इसमें हमने मीट्रिक स्पेसेस की जो टर्मिनोलॉजी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको डिस्कस किया है। आई होप दिस लेक्चर इज वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड हम लोग जो है आगे भी इस तरीके के लेक्चर्स आप लोगों के लिए डिजाइन करेंगे।
और भी बनाएंगे. So thank you very much for listening me carefully, and I will meet you in the next lecture.